Hello friends, in this video I will discuss types of stomata. First, what is stomata? Stomata is a pore of plant leaf or any green part of the plant through which gaseous exchange and transpiration occur. So here we can see the stomata is the minute pores. Minute stomata is the minute pores which occurs in the epidermis of the plants. एपिडर्मिस और एक्सटर्नल जो स्किन होता है प्लांट का उसमें मिलता है एपिडर्मिस ऑफ द प्लांट. इडिस्टोमा remain surrounded by two kidney or bean shaped epidermal cell, that is guard cell. So this is the pore of the stomata, and this pore is surrounded by two guard cell. The guard cell bear chloroplast, and this guard cell again covered by subsidiary cell. Okay, and subsidiary cell, they do not chlorophyll present, so do not photosynthesis occur, but in guard cell photosynthesis occurs. So in case of dicot plant, there is a bean shaped stomata are present, but in monocot plant the dumbbell shaped protoplast are found, or dumbbell shaped stomata are found. So normally in plant and plants, in plants, monocot plant dumbbell shaped and dicot plant bean shaped stomata are found. But there are different type of stomata present in nature. First, depending upon the periodicity of stomata. Periodicity मतलब वो दिन में कितना टाइम ओपन रहता है, कितना क्लोज रहता है, that is called periodicity. The number one, cereal types or barley types. Number one, cereal types or barley types. This type of stomata opens for a few hours only. During the day, this type of stomata, cereal type of stomata, opens only few hours. Okay, found in wheat, barley, and maize. Number two, alfalfa type. Stomata remain open throughout the day and close at night. मतलब ल्यूसर्नी or alfalfa type of stomata opens throughout the day and close at night. Okay, found in alfalfa or under condition of reduced availability of water. The stomata open for shorter duration during evening and night. मतलब नॉर्मली क्या होता है, पूरा दिन खुला रहता है और रात में बंद हो जाता है अल्फाल्फा टाइप ऑफ स्टोमाटा. बट अगर प्लांट में पानी का रिड्यूस होता है, पानी का अमाउंट कम होता है, तब क्या होता है, दिन में नहीं खुला रहता है, वो शाम में इवनिंग टाइम में नाइट में खुला रहता है. फाउंड इन अल्फाल्फा, मस्टर्ड, रेडिश, ऑफनशिया. नंबर थ्री, पोटैटो टाइप. The stomata remain open both during the day and night. In case of potato type stomata, the stomata open both during day and night. मतलब 24 hours stomata open रहता है. Found in potato, cucurbit, and tulip. Number 4, equisetum type. The stomata seldom close. स्टोमाटा हमेशा क्लोज रहता है. Sagittaria. Our type of stomata depending upon the surface of the on the basis of number of stomata. Stomata लीफ के ऊपर कितने नंबर की स्टोमाटा रहता है, दिस ऊपर on the basis divide 5 type of stomata. First, apple or mulberry types. Stomata present only on the lower surface. So in case of mulberry type or apple type, the stomata present only lower surface of the leaf, found in mulberry, people, banyan. Number 2, potato type. Again on another type is potato type. More stomata occur on the lower surface. मतलब upper surface में stomata रहता है, मगर lower surface में ज़्यादा stomata रहता है. That is potato, tomato, sunflower. Number 3, oat type. Oat type. Equal number of stomata present on upper and lower surface, found in oat and verbena.
Water lily types. Leaves are epistematic with stomata being present only on the upper surface of the leaves. मतलब वाटर लिली क्या होता है, पानी में रहता है, इसलिए इसका अपर सरफेस में ओनली स्टोमाटा प्रेजेंट है, लोअर सरफेस में नहीं है. दैट इज नीलाम्बो, निम्फिया एटसेट्रा. अगेन स्टोमाटा को अब फिर डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर एंड अरेंजमेंट ऑफ सब्सिडियरी सेल. मतलब दिस इज गार्ड सेल एंड जो बाहर में जो होता है दैट इज सब्सिडियरी सेल. सब्सिडियरी सेल का नंबर के हिसाब से हम स्टोमाटा को डिवाइड करते हैं. फर्स्ट एनामोसाइटिक स्टोमाटा और इरेगुलर शेप्ड स्टोमाटा. एनामोसाइटिक मतलब देखो यहाँ पे क्या, द गार्ड सेल्स आर सराउंडेड वेरिएबल नंबर ऑफ सेल्स दैट आर इनडिस्टिंग्विशेबल फ्रॉम अदर एपिडर्मल सेल. तो यहाँ पे वेरिएबल नंबर ऑफ सब्सिडियरी सेल प्रेजेंट. वेरिएबल नंबर ऑफ सब्सिडियरी सेल्स प्रेजेंट. देयर इज नो स्पेसिफिक अरेंजमेंट ऑफ पैटर्न. मतलब इसका यहाँ का इसका नंबर और अरेंजमेंट इसका कोई पैटर्न नहीं होता है, जस्ट इरेगुलरली अरेंजमेंट होता है. दैट इज कॉल्ड एनामोसाइटिक टाइप ऑफ स्टोमाटा. ओके, व्हेन example, this type of is commonly found in many dicot families as Ranunculaceae and Paveraceae. Ranunculaceae and Paveraceae फैमिली में मिलता है एनामोसाइटिक और इरेगुलर टाइप ऑफ स्टोमाटा, जहाँ पे सब्सिडियरी सेल का कोई अरेंजमेंट भी नहीं होता है, कोई नंबर फिक्स्ड नंबर भी नहीं होता है. नंबर 2 एनाइसोसाइटिक अनइक्वल सेल टाइप. अनइक्वल सेल मतलब यहाँ पे देखो सेल आर डिफरेंट इन शेप साइज. वो थ्री नंबर ऑफ थ्री सेल ही प्रेजेंट होगा सब्सिडियरी सेल एंड दे आर डिफरेंट इन शेप एंड साइज. द गार्ड सेल आर सराउंडेड बाय 3 सब्सिडियरी सेल. यहाँ पे क्या होता है, 3 सब्सिडियरी सेल मिलता है. एक लार्ज होगा, एक मीडियम, एक स्मॉल होगा. where one is distinctly smaller than other two and this one is more shorter than other two. Example, commonly seen in family like Solanaceae and tobacco potato. Okay. नंबर 3 पैरासाइटिक. तो एनामोसाइटिक में क्या होता है, क्या हुआ, सब्सिडियरी सेल का नंबर एंड अरेंजमेंट उसका कोई रेगुलरिटी नहीं है. एनामोसाइटिक में क्या हुआ, 3 सेल रहेगा सब्सिडियरी सेल, वन इज मच स्मॉलर देन अदर्स 2. नंबर 2 डायासाइटिक. डायासाइटिक मीन्स पैरासाइटिक. द गार्ड सेल्स आर फ्लैंक्ड बाय 2 सब्सिडियरी सेल. यहाँ पे देखो 2 सब्सिडियरी सेल आर longitudinally present that are oriented parallel to the long axis of the stomatal pore. Long axis of the stomatal pore. Okay, around the guard cell, found in Rubiaceae, coffee, Fabaceae, beans and peas family. And another is diacytic. This one, dia means 2, cross culture. In this type, the guard cells are surrounded by 2 subsidiary cells that are oriented perpendicular to the long axis of the stomatal pore. Example seen in families like Caryophyllaceae and Acanthaceae. So, in case of anocytic, there is irregular subsidiary cells, irregular number, irregular arrangement. In anocytic, 3 subsidiary cells are present around stomata, around guard cells. One is much smaller than the others 2. Diacytic, the 2 stomatas present and they are oriented perpendicular, and oriented along the main axis of the stomatal pore. Then 5 actinocytic stomata. Actinocytic means the guard cells are surrounded by a circle of radiating subsidiary cells. This actinocytic radiating subsidiary cell, many number of radiating subsidiary cells. That means multiple subsidiary cells present, multiple subsidiary cell radially arranged around the guard cells, and it's appear like a star-like appearance, and star-like and present appear like a star. Found in monocot, some monocot families such as certain grasses.
Next number is gramineous type. Gramineous type. Gramineous type. In these guard cells are wider at the end and narrow in the middle. Wider at the end and narrow in the middle. In the guard cell, this is guard cell stomatal 4 and wider and narrow at the end. इनसाइड नैरो होता है और मिडिल में होता है, मतलब मिडिल में वो वाइड होता है, दोनों साइड में नैरो होता है. ग्रामिनेशियस टाइप फाउंड इन पोएसी एंड साइपरेसी. देन टेरासाइटिक स्टोमाटा. टेट्रासाइटिक मीन्स टेट्रा मीन्स 4. तो गार्ड सेल के आसपास में क्या होगा, 4 सबसिडियरी सेल रहेगा. ओके. Stomata that have four subsidiary cells around the guard cells, one on each end of the opening and one next to the each guard cell. Okay, one each to the guard cell and next of the opening. 4 सेल एस्क्लेपिडिएशन को मिलता है. अब स्टोमाटा को डिवाइड करेंगे हम ऑन द बेसिस ऑफ इवोल्यूशनरी डेवलपमेंट. फर्स्ट, haplochilic stomata. Haplochilic stomata. This stomata develop from a single initial cell. In case of haplochilic stomata, the stomata develop from single initial cell. This is the main fact. In case of haplophilic stomata, the stomata develop from single initial cell that divide to form both the guard cell and the surrounding subsidiary cell. मतलब single initial cell जो divide and produce the guard cell and surrounding subsidiary cell. This type of stomata develop also more primitive. The development process is relatively simple and direct. Okay, haplochilic stomata are commonly found in fern and gymnosperm. This is haplochilic, जहाँ पे एक initial cell से guard cells and subsidiary cells are formed. Synderochilic. In this type, the guard cells and subsidiary cells develop from multiple initial cells. In case of haplochilic, the guard cell and subsidiary cell develop from single initial cell. But in case of synderochilic stomata, the guard cell and subsidiary cell develop from multiple initial cell. And this is complex and more advanced than haplochilic. Examples: synderochilic stomata are typically in most angiosperms flowering plants. फर्न एंड जिम्नोस्पर्म में क्या मिलता है, हैप्लोचिलिक, और इसमें एंजियोस्पर्म मिलता है synderochilic. Again, the stomata is divided on the basis of developmental origin. Stomata are also classified based on their developmental origin, which refers to how the guard cells and substrate cells are formed during the growth of the plant. The first, mesogenous stomata. In mesogenous stomata, both the guard cell and subsidiary cell originate from the same initial cell, one type of haplochilic. This initial cell undergoes series of division to form the complete stomatal complex. Example common in monocot families such as Poaceae and Liliaceae plant. The mesogenous stomata, guard cell and subsidiary cells develop from single initial cell and series of division to produce both guard cell and subsidiary cell. Number 2 is perigynous stomata. In perigenous stomata, the guard cells and the subsidiary cell originate from different initial cell. Means it is same as haplochilic and synderochilic. In haplochilic, the guard cell and subsidiary cell produced from single initial cell. Here also the different initial cell. Perigenous stomata found in Asteraceae and Fabaceae. So this is the different type of stomata I describe here. I think it is beneficial to you. So thank you for watching this video.